Good evening, people. Am I audible to all of you? Can you all hear me, see me? Yes, sir. बहुत बढ़िया. So RCs is something that I had not touched until now. So I thought that I will take some of the RCs of this is IPMAT. अच्छा एग्जाम कब है आपका? IPMAT इंदौर का एग्जाम शायद 16th of May को है, right? Is it correct? You have IPMAT 16 Indore. June, sir. 16 June. So there is something in May as well. Sir, 20 May को I am रोहतक का है. Okay, 20th May you have IIM Rohtak, and then you have 16 June. Okay. And are there any other exams in between apart from these two? Which other Sir, exams? JIPMAT. Okay, JIPMAT किसके लिए होता है ये? Sir, I am both Gaya and Jammu. अरे यार ये तो पता भी नहीं होता. तो इनका क्या है मतलब when is their date? JIPMAT का डेट आ गया है क्या? शायद 28 मई को है. 28 मई को है. ओके, 16 जून CUET है. CUT शायद मई में है ना, जून में है. Sir, 16 जून को IPMAT इंदौर है. और क्या कहते हैं CUET लास्ट वीक है मई में. ओके ओके. तो हर एक का अपना अपना मॉक टेस्ट है, हर एक का अपना अपना ये है. सो इट कैन बी वेरी cumbersome because you have to prepare differently for different exam, correct? They all have their own unique pattern, they all have their own difficulty. But most of them are of a lower difficulty except IPMAT Indore. IPMAT Indore has, I think, the highest difficulty amongst all the papers. Symbiosis का भी दे रहे होगे आप लोग, right? Symbiosis का SET है Yes, शायद. sir. तो उसका डेट Yes. क्या है? 14 and 6 May. 14th of May and 6th of Yes, June. May. May. अच्छा, तो पहले तो आपका May. So you can say that most of the exams will commence from the first week of May. Yes. Time बहुत कम रहेगा, ठीक है. So that's the reason why it becomes difficult to prepare comprehensively for any exam, because सबके अपने पैटर्न है, अपना एक एक सेटअप है. So the idea is, as we had discussed earlier, कि भाई ठीक है, you should prepare for all varieties of questions. जैसे हमने पैराजम्बल्स किए, हमने vocabulary किया हुआ था. Today I thought of taking RCs, and this is the IPMAT 2022 paper of Indore. IPMAT Indore 2022 paper. I have solved this paper completely for you, but I did not take the RCs, I remember. So I thought that I will solve some of the RCs from here. And there is one RC session that you people have attended, and that is RC main idea wala session. So most of you must have understood how to read the RC, how to attack and find the answers to the questions. This pattern is the most common way and direct way of attacking the questions. Now, coming to what we would be doing in the coming 5 sessions, जैसे कि मैंने back-to-back sessions रखे हुए हैं, so I thought that I would be taking you through RCs. And one more thing which I would want to take you through is grammar. अब ग्रामर में मैंने क्या किया है ना कि ग्रामर भी अगेन इट्स अ ह्यूज सिलेबस. देयर इज समथिंग लाइक कि भाई ठीक है, देयर इज नो एंड टू इट. बट मैंने क्या प्लान किया है, डू यू वांट मी टू टेक ग्रामर क्वेश्चंस और ग्रामर कॉन्सेप्ट्स, मतलब या क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट दोनों एक साथ पढ़ाऊं? कैसा करना चाहते हैं? Yes, sir. Concept and questions both साइमल्टेनियसली करेंगे तो सही होगा ना. क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना कि जो मेरा स्टाइल है, जो मेरा कवरेज है पढ़ाने का, वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाता हूँ. सो आई वाज वंडरिंग इफ आई कैन अकोमोडेट बोथ. आई कैन टेक क्वेश्चंस एंड देन आई कैन टीच यू ग्रामर, मतलब टिट्स एंड बिट्स पढ़ाता रहूंगा. बिकॉज इससे क्या होता है ना कि you discuss the verb, you discuss everything about the verb. As you discuss prepositions, you discuss phrasal verbs as well. And आपने वर्ब टेंस भी डिस्कस कर लेना है फिर. तो उस तरह से क्या होगा ना कि ग्रामर का हर एक चैप्टर खत्म होते चले जाएगा. डू यू पीपल हैव कलेक्शन ऑफ ग्रामर क्वेश्चंस विथ यू? मतलब ग्रामर के मेरे पास भी क्वेश्चंस है, जीमैट के हैं, बट मुझे लगता है जीमैट के क्वेश्चंस कराऊं ना कराऊं उसमें मतलब होता नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है. सो आई वाज वंडरिंग इफ यू हैव सम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन बैंक विथ यू, आई कैन यूज दैट क्वेश्चन बैंक व्हाइल टीचिंग यू, एंड वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस एंड टेक द कॉन्सेप्ट्स. तो ऐसा कुछ क्वेश्चन बैंक है क्या आपके पास? No, sir. कोई भी क्वेश्चन बैंक नहीं है पीडीएफ फॉर्मेट में? नहीं, मेरे पास प्रथम का है, प्रथम का देखा है मैंने. तो प्रथम का तो मुझे लगा ठीक है, बहुत ऑर्डिनरी है वो.
हालांकि उसमें से भी मैं करा सकता हूँ, बिकॉज कॉन्सेप्ट ही करना है तो उससे करा सकता हूँ, बट मैं क्या चाहूंगा कि जो कोर्स मैंने ग्रामर डाला हुआ है, ग्रामर के क्वेश्चंस डाले हुए हैं, तो अगर आप उसको करोगे मेरे सेशंस के बाद में सॉल्व, वो सॉल्व करोगे तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगा. So what I will do is I will take the concepts in bits and pieces, and then I will ask you to go to the relevant topic in the course and try to solve those questions. Because वो question solve करने से ये जो IPMAT वाला पेपर है ना आपका ग्रामर का, ग्रामर के क्वेश्चंस आपके बनने लगेंगे. तो मैं क्या करूंगा ना कि आई विल ट्राई टू फाइंड सम एक्सरसाइजेस एज वेल फॉर यू पीपल, कि जो बहुत बेसिक एक्सरसाइजेस नहीं होते हैं उनको मैं ट्राई करूंगा यहाँ वहां से इकट्ठा करने का, एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेवल पे होगा तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा. ठीक है. अपन क्या करेंगे ना कि इंपॉर्टेंट एरियाज को अटैक करेंगे. इंपॉर्टेंट एरियाज का मतलब क्या होता है सर कि हाँ. सर मैं आई वुड से कि please focus more on concepts, like हाँ नहीं little more on concepts. हाँ, तो मैं क्या करूँगा कॉन्सेप्ट के जब फोकस करूंगा ना तो उसके आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी देता रहूंगा, सो दैट यू गेट अ फेयर आइडिया कि कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन कैसे होता है. बहुत सारा ग्रामर ग्रामर मैंने बहुत बढ़िया पढ़ाया हुआ है, एंड आई थिंक इफ आई गिव अराउंड 7-8 आवर्स टू इट वो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं होगी. ठीक है. क्लियर विद दिस पीपल, क्योंकि ग्रामर इज वन थिंग विच आई हैवंट टच्ड सिंस आई स्टार्टेड. बहुत पहले शायद मैंने एक इंट्रोडक्टरी सेशन लिया था वो पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह का, बट सिंस देन आई हैव नॉट टेकन एनीथिंग एनीथिंग सिग्निफिकेंट एज सच. तो मैं कराऊंगा. लेट्स सी हाउ दैट शेप्स अप, एंड उसी से अपन क्या करेंगे कुछ क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व. बट मैं चाहता हूँ क्वेश्चन आप सॉल्व करें मेरे कोर्स में से, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि हर एक टॉपिक को कवर किया गया. आई विल शो दैट टू यू वंस आई टेक द ग्रामर कॉन्सेप्ट्स, ताकि ग्रामर आप अच्छे से कर लें, बिकॉज ग्रामर और वोकैबुलरी से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, और अगर आप थोड़ा सा फॉर्म में रहेंगे तो बहुत सारे बन भी जाएंगे. ठीक है. So let's not waste time. I would want to start with the RCs here. RCs of IPMAT Indore are slightly tricky. कभी कभार मेरे को समझ में नहीं आता यार कि आंसर ये क्यों है. There would be surprise element. Hopefully in the exam you can pray that the difficulty is on the lower side. क्योंकि अगर आरसी की डिफिकल्टी लोअर साइड होती है तो बहुत आसान हो जाता है, फिर वो स्कोरिंग बन जाता है. ठीक है. सो लेट्स रीड इट द वे वी वुड हैव गॉन एंड रेड द आरसी. कोई उसमें बहुत पढ़ना नहीं है. अच्छी चीज ये है कि जैसे कैट के आरसीज होते हैं ना उसमें बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं. इन्फरेंस के बहुत सारे आते हैं. ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड एक्सेप्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट वीकन द ऑथर्स आर्गुमेंट एक्सेप्ट. तो वो जो वर्डिंग होती है इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है ना कैट में कि फॉर यू पीपल थैंकफुली देयर इज नो सच कॉम्प्लिकेशन, and we will get to see once we go through the passage. So this is the first passage of last year's IPMAT Indore paper. All of you can see and read the text. Is it not too small, or is it fine enough for all of you? सही लग रहा है सबको? Yes, sir. सही लग रहा है ना? चलो बढ़िया है. एक मिनट एक हट ही नहीं रहा है. एक मिनट. ओके ऐसा करते हैं. So I will go to the very first. In fact, if you look at last year's paper, you had two RCs back to back. So there was six questions in the first RC, and there were I think 6 questions in the second RC. तो 12 क्वेश्चन आरसी से आए हैं तो ऑर्डिनरी नहीं है. 12 क्वेश्चन एक सिग्निफिकेंट नंबर होता है. और बाकी सब हमने किए हुए तो हमने देखा है कि मोस्ट ऑफ देम आर वोकेबलरी काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, मोर अबाउट इंग्लिश यूसेज रादर देन एनी कॉन्सेप्ट. सो वी विल रीड द फर्स्ट आरसी. हर एक क्वेश्चन को ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, कैटेगराइज करेंगे कि ये कैसा क्वेश्चन है. Bananas, apples, and sorry, bananas, apples, and avocados continue to ripen after they are picked. Cherries, blackberries, and grapes do not. The difference between climacteric fruits, the former, and non-climacteric fruits, the latter, matters to fruit growers and greengrocers, who must make sure their wares are in tip-top condition when they arrive at the marketplace. But how those differences originally came about remains unclear. तो दो फ्रूट्स की बात हो रही है. एक तो जो है पिक करने के बाद में राइप होते रहते हैं, दूसरा है जो नहीं होते हैं, राइट. सो दिस इज व्हाट इट सेज. सेकंड पैरा क्या बोल रहा है? टू बायोलॉजिस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो ऑफर अ सजेशन. Sir, फ्रूट्स can दे. we read it ourselves first? हाँ, यू प्लीज रीड योरसेल्फ, राइट, ताकि फिर मैं है ना मैं आपको सॉल्व कराऊंगा. ठीक है.
Done with the reading, people? Yes, sir. देखो आपने जो रीड किया होगा तो आपको लगा होगा ठीक है, the author seems to be discussing some sort of fruit, and then he has categorized those as climacteric and non-climacteric, and what exactly they mean is given in the first paragraph. So they were wondering actually that why this distinction of climacteric and non-climacteric. Two biologists of the Tokyo of उनका मेन प्रॉब्लम क्या था मालूम है क्या कि हाउ दोज डिफरेंसेस ओरिजिनली केम अबाउट रिमेन्स अनक्लियर. सो ऐसे फ्रूट्स क्यों हैं जो तोड़ने के बाद भी राइप होते रहते हैं, और ऐसे फ्रूट्स क्यों जो तोड़ने के बाद राइप नहीं होते, दे वोंट राइपन एनी मोर. तो ये डिफरेंस कैसे नेचर में आया होगा ना, दे आर वंडरिंग कि ये डिफरेंस नेचर में कैसे आया होगा. दैट इज वेयर द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो बायोलॉजिस्ट दे कम इनटू द पिक्चर, and they have done some sort of research, it seems, and they say that it all depends upon how they want to spread the progeny. What is progeny? आने वाली जनरेशन कैसे बढ़ाएंगे वो लोग, है ना. बच्चा. हाँ, तो ये पर्पस होता है. So and that is given somewhere in the second paragraph. So climacterism and non-climacterism has that purpose, and अभी मैं उसको पढ़ूंगा नहीं because मुझे समझ में आ रहा है कुछ तो है, but वो दिया हुआ है second paragraph में. So what these people do was to test their idea. The two researchers studied 80 varieties and then they noted something. And there is a strong correlation. मतलब उनका जो hypothesis है वो शायद कर रहा है काम. And the author's hypothesis is fortified by other evidence. They point out that non-climacteric fruits tend to have vivid colors, especially reds and purples. This may help them to stand out amid the foliage. Climacteric fruits are generally better camouflaged. The main limitation of their work is that they looked at, ठीक है, तो उनके वर्क का एक लिमिटेशन भी है. तो मेरे को ना बहुत कुछ समझ में नहीं आया because I'm not a biologist. What I do understand is that there is some sort of climacteric, non-climacteric. This has happened in nature, and some sort of natural selection has to do with it. There are two biologists from Tokyo. They are beating their head on this. Let's go and have a look at the question. समझ में आएगी नहीं? जरा सरणी पढ़ते हैं. क्या लिख रहा है? Which of the following options means arboreal and camouflage? Arboreal का मतलब क्या है और camouflage का मतलब क्या है? Vocabulary question आ गया ना सीधा. Arboreal क्या होगा? Camouflage क्या होगा? Can anyone tell me? People? So, arboreal see. related Arboreal to तो trees. हाँ, trees हो गया जो trees में रहता है, और camouflage क्या होगा? Sir, कलर को जो लेके होगा ना. disguise जो. हाँ, ये तो पता होना चाहिए. देखो camouflage word you should know. Camouflage का मतलब होता है to hide your color so that it blends with the surrounding color. So chameleon and other lots of things, lots of creatures, they take the color of the tree branch or the leaf so that they become almost invisible. Can I say this was a very very easy question? Yes, sir. अगर आपको बहुत डाउट है तो आप क्या करो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट्स आर जनरली बेटर कैमोफ्लेज दैट मेक्स देम हार्डर टू स्पॉट. अगर आप यहाँ पे पढ़ते हो आकर के तो आपको आंसर एनीवेज मिल जाएगा, इवन इफ यू डोंट नो द मीनिंग, है ना. इट बिकम्स हार्डर टू स्पॉट. सो डिस्गाइज होगा या फिर हिडन होगा, है ना. तो सर आर्बोरियल का भी लिखा हुआ है ऊपर. हाँ, लिखा हुआ है. सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ये सब क्या इतना आसान. According to the passage, the interest in the difference between climacteric and non-climacteric fruits is in the Environmental context. according to the passage, the interest in the difference between is in the dash. तो interest दोनों में क्यों है? पब्लिक हेल्थ तो नहीं, पब्लिक हेल्थ तो नहीं होना चाहिए. कमर्शियल कॉन्टेक्स्ट हो सकता है ना, क्योंकि अगर क्लाइमेक्टेरिक एंड नॉन क्लाइमेक्टेरिक है तो जो तोड़ने के बाद में फटाफट खराब होने लगेगा उसको ज्यादा, उसको आपको अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा ना. ऑन दी अदर हैंड जो तोड़ने के बाद जल्दी खराब नहीं होता उसको आपको लंबे टाइम तक आप यूज कर सकते हो. सो कैन आई सी इट कुड बी इन द कमर्शियल कॉन्टेक्स्ट? यस और नो? सर पर कमर्शियलाइजेशन की तो कहीं बात ही नहीं करी. इट्स मोर अबाउट प्रोजेनी एंड कैसे वो Bananas, apples, and avocados continue to ripen after they are picked. Cherries, blackberries, and grapes do not. The difference between climacteric fruits, okay, so cherries, blackberries, the former, and non-climacteric fruits, the latter, matters to fruit growers and greengrocers who must make their wares are in tip-top condition when they arrive at the marketplace. So this is basically the difference between these two matters a lot to the greengrocers and to the people who are selling it, right?
because it should be in tip-top condition when they arrive at the market place. But how those differences originally came about remains unclear. So the biologists are wondering as to how these differences came about. And from here onwards, till the end of the paragraph, I see nothing but these two biologists, they have some sort of suggestion. And all these things are given. कि उन्होंने ये किया, वो किया, 80 variety try की इसमें. So there is a correlation and they came to a hypothesis. ठीक है? They point out that non-climatic foods tend to have vivid colors. ठीक है, वो तो खैर उन्हें मतलब observations थे उनके. So when I go to the options, it says according to the passage, the interest in the difference between climatic and non-climatic food is in the public health तो नहीं होगा. Gastronomical भी पता नहीं भाई, gastronomical का मतलब होता है जो taste को लेके नहीं होता. So gastronomical context basically means what is good for health, what to eat and what is more tasty. उस तरह का है. So what I feel is that when you look at public health and gastronomical, they both go out. The only options that could make some sense is commercial and public health. Sorry, commercial and environmental context. अब environmental context, commercial context तो समझ में आ रहा है from the first paragraph कि भाई ठीक है, the interest in the difference between this is in the commercial context. But environmental context में कैसे fit करेंगे मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है. How would you fit it in the environmental context? The interest in the difference between climatic and the Sir, about how animals eat the वो foreign food that they continue to ripe and how the वो aerial birds like they discuss are eating the fruit or helping them for इसका the आंसर क्या है? protein. किसको पता है इसका आंसर क्या है? Anyone is aware of it? No one has solved it. क्योंकि देखो यार क्या है ना, उसका आंसर दिया होगा. मार्केट प्लेस जो है ना, हम लोग जब एनवायरमेंटल बना रहे हैं ना, वो हम यहाँ वहाँ चिपका रहे हैं कुछ भी, डिपेंडिंग अपॉन आवर. द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेक्टेरिक एंड नॉन क्लाइमेक्टेरिक मैटर्स टू फूड ग्रोअर्स. तो द इंटरेस्ट जो है ना, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू और वेरियस मैटर्स टू फूड ग्रोअर्स एंड ग्रीन प्रोसेस. एनवायरमेंटल वालों को कुछ इंटरेस्ट नहीं है, वो तो खाली बस देख रहे हैं कि ऐसा क्यों है. हाउ दोज डिफरेंसेस केम अबाउट इज द कंसर्न ऑफ द पीपल हु आर द बायोलॉजिस्ट. ये दोनों डिफरेंस कैसे आ गया आखिर. तो जो इंटरेस्ट है ना, वो फ्रूट ग्रोअर्स को है. द इंटरेस्ट इन द डिफरेंस, ये किसका इंटरेस्ट है? फ्रूट ग्रोअर्स का है ना. अगर आप एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट देखोगे तो एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट ठीक है, मतलब इट इज नॉट देयर इंटरेस्ट एक्चुअली. दे आर कंसर्न विथ हाउ इट ऑल ओरिजिनेटेड. तो मुझे लगता है आंसर ए होना चाहिए, बिकॉज वी हैव एक्सप्लिसिट एविडेंस फॉर दैट. एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट बड़ा वेग वर्ड हो जाता है. एनवायरमेंट का मतलब तो है ही नहीं एक्चुअली. वो नेचुरल कॉन्टेक्स्ट, इवोल्यूशनरी कॉन्टेक्स्ट बेटर होगा मुझे लगता है. I would always favor the word evolutionary context. Why? Because दो biologists दोनों है ना, उनको इंटरेस्ट है, लेकिन वो इंटरेस्ट किस चीज को लेकर के कि ये डिफरेंस आया कैसे. तो इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म पे उनको इंटरेस्ट है, ना कि एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट में. डिड यू अंडरस्टैंड हाउ एनवायरमेंटल इज डिफरेंट फ्रॉम इवोल्यूशनरी? Yes, sir. इसलिए वहां पे उसने साफ साफ लिखा हुआ है, पता है कि उसने ये वर्ड यूज किया है, that but how those differences came about remains unclear and this is where the biologists have come into picture. तो ये दोनों कैसे आया होगा, इसके टुवर्ड्स एंड में क्या लिखा हुआ है ना, इससे ये है, they po- they point out that non-climatic fruits tend to have vivid colors, especially reds and purples. This may help them to stand out amid the foliage of their parents. Climatic fruits are generally better camouflage that makes them harder to spot. ये basically एक तरह से evolutionary development हुआ है ना. This has probably contaminated the sample for thousands of years of selective breeding for traits in human beings. And ठीक है, मतलब I think commercial context is सही है, no doubt about it. Next क्या है, the main point that the writer makes is that fruit bearing plants यही है ना, of all kinds need to be studied, not just those human by humans. Yes, sir. Towards end में उसने बोला है वो बात, तो अपने गलती की. उसने क्या बोला है, the main limitation of their work is that they looked at foods eaten by people only. तो उसने क्या किया, जो स्टडी थी, the study was what, that okay, we will go and check how these differences between climacteric and non-climacteric came about. So they started studying certain fruits, but when they studied those fruits, there was one problem. The limitation was that they looked at foods eaten by people only. This has probably contaminated the sample, because I will tell you why. अगर आप human जो the fruit that is eaten by humans की भी use करोगे बार बार,
So humans have done selective breeding over the years, and because of that, जो nature and environment होता है वो corrupt हो गया है. So the next step, therefore, should be the analysis of wild foods. So you just don't look at the foods eaten by people. You should look at the foods that are there in the wild and are eaten by animals. So if you look at this, then क्या हो रहा है? The main point that is making that fruit-bearing plants of all kinds need to be studied. Can I say this is definitely true? तो पक्का true है, इसको तो हम deny नहीं कर सकते. Yes or no? Can we deny this? No. No, sir. This is मुझे true. बताओ कि A हो सकता है क्या? Are better protected than other plant species and can propagate easily. There is a difference between certain different fruit bearing plants, but fruit bearing plants and other plant species का difference नहीं है. Fruit bearing plant of one kind and fruit bearing plant of the other kind में difference आया हुआ है. Did you understand this? But fruit bearing plant has not been compared with other plant species that do not bear fruit. And he has nowhere said that they cannot be studied accurately. In fact, he said that you take into account wild fruits as well so that you have a better sample. Clear to everyone? Yes, sir. Correct? आगे बढ़ें. All of you are clear about this question? If yes, I will go to the next point. Consider the following two findings. एक minute, sorry. Non-climacteric fruits tend to have vivid colors, and 36 varieties of climacteric and non-climacteric foods were eaten predominantly either by ground bearers or by arboreal origin. ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा है. Both findings 1 and 2 provide supplementary evidence confirming the hypothesis of the biologist. Both findings 1 and 2 provide main evidence confirming the hypothesis of the biologists. Supplementary evidence, main evidence. Finding 1 provides main evidence and finding 2 provides supplementary evidence. Finding 1 provides supplementary evidence, finding 2 provides main evidence. What is the difference between supplementary and main? Yes, people, what is the difference between supplementary and main evidence? Supplementary का मतलब क्या होता है? कि this is the उसको main support thing. करते हैं. हाँ, जैसे आप एग्जाम में आपने पेपर लिखा होगा ना, तो आपने क्या देखा होगा कि आपका एक मेन पेपर होता है आपका. देन इन एडिशन टू दैट यू टेक समथिंग टू सप्लीमेंट. तो आप डाइट में भी सप्लीमेंट्स लेते हैं. तो आप तो मेन खाना खा ही रहे हैं, मेन खाना के साथ साथ आप कुछ और भी ले रहे हैं, तो वो आपका सप्लीमेंट हो जाता है. यू माइट टेक विटामिन पिल्स, यू माइट टेक certain tablets, all those kind of things. So that is known as supplement. Now let's try to understand that which is the supplement and which is the main evidence. Non-climacteric foods tend to have vivid colors. 36 varieties of climacteric fruits were eaten. So let's go and check in the passage जहाँ पे दोनों चीजें आई हैं. 36 has come somewhere, right? Look at this. Two biologists of the University of Tokyo offer a suggestion. Fruits they observe exist to solve problem faced by all plants. How best to spread their progeny around? फिर इसका next paragraph. हाँ ठीक है, next paragraph में जाते हैं. To test their idea, the two researchers studied 80 varieties of fruits and noted which animals each depended on its propagation. 35 of these fruits eaten by both ground-dwelling animals were non-climacteric. Further, 15 of this were climacteric. ठीक है? That is suggestively strong correlation. And the author's hypothesis is fortified by other evidence. तो fortified कौन हो रहा है? तो fortified मतलब ये आकर के additional evidence बन रहा है ना? The author's hypothesis is fortified by other evidence. That means the vivid color is basically coming as a supplement, and this is the main evidence that they have used, the numerical evidence. Yes or no? सर मतलब Fortified हो रहा है ना. The author's hypothesis is fortified by other evidence. Other evidence कौन सा है? ये वाला evidence है ना. तो दूसरा वाला evidence कौन सा है? If the author uses the word other evidence, मुझे बताओ कि इसने यहाँ पे क्या यूज किया है? The author's hypothesis is fortified by other evidence. That means एक और evidence है. वो कौन सा evidence है? ये वाला evidence है ना. So they are testing their idea. To test their idea, the two researchers studied 80 varieties.
and whatever came out, है ना, whatever came out is giving a strong correlation. So can I say that this is evidence 1? And then there is the other evidence. What? They point out that non-climacteric fruits tend to have vivid colors. Can I say this is evidence 2? Everyone agrees? Yes or no? sir. पहला एविडेंस क्या है? नंबर वाला एविडेंस है. क्या नंबर वाला एविडेंस है? They studied 80 varieties, है ना? 35 of these eaten by both ground dwelling and arboreal were non-climacteric. Further, 15 of the 19 varieties eaten principally by ground dwellers were climacteric, while 21 of the 26 fed on arboreal animals were non-climacteric. So they came across some numbers. This is suggestively strong correlation. So from this, you have a very, very strong correlation. And the author's hypothesis is fortified by other evidence. तो primary evidence कौन सा हो गया? ये हो गया ना. और fortify कौन कर रहा है? उसको ये भी कर रहा है. तो ये प्राइमरी एविडेंस होगा और ये सेकेंडरी होगा ना. Yes or no? Based on the words they have used, the author's hypothesis is fortified. Fortified का मतलब क्या है? Strengthened, है ना? It is strengthened by other evidence. So this has come as the primary evidence, which they have discussed numerically, and then they have come with the one more evidence, and which is that they tend to have vivid colors. So if you go and check here down below, you will see that both the findings 1 and 2 provide supplementary evidence confirming the hypothesis of the biologist. Possible hai? They both are supplementary evidence confirming the hypothesis, correct? Both findings and 1 and 2 provide main evidence confirming the hypothesis. Are they supplementary evidence? Are they main evidence? Finding 1 provides main evidence and finding 2 provides supplementary evidence. Finding 1 provides supplementary. ये बहुत tough हो जा रहा है मेरे लिए. Don't you think it's very tough? ऐसा लग रहा है कि दोनों सप्लीमेंट्री है या दोनों मेन है. Yes or no? क्या मार्क करोगे? तो ये वाला क्वेश्चन छोड़ देंगे क्योंकि टाइम भी बहुत छोड़ ले रहा है देंगे. ये आप कुछ question। मार्क करके निकल जाओ क्योंकि मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है. अब टोन से ऐसा लग रहा है कि भाई ठीक है, नंबर वाला मेन है, दूसरा वाला सप्लीमेंट्री है. बट मतलब वी कैन नॉट गो विद द टोन ऑफ द ऑथर. It's possible that they both are supplementary evidence and they both are acting like hypothesis. They both are confirming the hypothesis. So difficult है. So I would suggest that okay, fine, you might take too much of time, or when you see such a lengthy question, you can try to just check and eliminate because number अच्छा खासा लंबा question है, point 1, point 2, and then you have to go and check from the passage. So this could be a little boring and lengthy question. So I preferably would want you to not touch upon these kind of questions. क्योंकि देखो क्या होने वाला है पता है क्या, कि टाइम बहुत कम रहेगा, सबके सब क्वेश्चंस कवर करने हैं. हमने पैराजम्बस में रूल फॉलो किया है. अगर छोटा है और उसमें बहुत सारा एविडेंस है, 4 सेंटेंस का है, तो उसको अटेम्प्ट करो पहले आप. बट अगर उसमें 5 सेंटेंस बहुत लंबे लंबे हैं, तो टेक देम एट द एंड, और मे बी यू कैन इवन लीव देम, बिकॉज getting into these kind of questions means spending more time, and then spending more time does not guarantee that you will get the question correct. That is the reason why I suggest कि ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगते हैं कि थोड़ा आपको पेन देंगे, उनको आप छोड़ना सीखो. एटलीस्ट टाइम सेव होगा तो कहीं और इन्वेस्ट हो जाएगा. Clear with this, people? This is the reason why analyzing past year papers can be of great help. The origins of the distinguishing characteristics between the two types are clear. हो गया क्या? Clear नहीं हुआ ना, because the origins Because are clear. wild fruits का नहीं लिया था. हाँ, क्लियर तो नहीं हुआ ना. क्लियर नहीं हुआ है बिकॉज ऑथर ने बोला है कि अपने को वाइल्ड फ्रूट्स का भी वो करना है, तभी अपने को समझ में आएगा. क्लियर नाउ एज अ रिजल्ट. अगर क्लियर होता तो ऑथर सजेस्ट नहीं करता ना कि वाइल्ड फ्रूट्स को भी आप स्टडी करें. तो क्लियर तो पक्का नहीं हुआ है. Nebulous in spite of research are not very clear. The origins of the distinguishing between two types of are trivial at this stage. Insignificant है या dependent on researcher observation या nebulous in spite of research. ये सब ऑप्शन में घटिया लग रहे हैं, सही बताऊं तो. But which one would you mark? मुझे लगता है ये सही होगा, डिपेंडेंट ऑन रिसर्च और ऑब्जर्वेशन. यस सर. क्योंकि अभी इसको और भी इस पे वो करना है ना. ट्रिवियल मतलब इनसिग्निफिकेंट होता है, तो इनसिग्निफिकेंट तो है नहीं, बिकॉज देयर इज डेफिनेटली समथिंग दैट हैज कम आउट ऑफ इट.
but we cannot say it is insignificant and we cannot say that it is clear. Both are extreme options. दोनों A और D बाहर जाएंगे. एक बोलता है कि insignificant है, insignificant तो नहीं है because the author says that there is something that has come out of the research that these people have done. और clear भी नहीं, why? Because he says that you have to study wild fruits as well, because by studying human fruits you cannot come to some sort of conclusion so soon. तो बचता क्या है? nebulous in spite of research. दूसरा आता है dependent. Now nebulous का मतलब होता है lack of clarity. ऐसा नहीं है कि clear है, clear मतलब clear है और sorry clear नहीं है उसका मतलब lack of clarity है. It is still it still needs to be supplemented by something more. So I would say dependent on researcher observation. Something like this, but बहुत अजीब सा worded question है. Let's look at the last paragraph, है ना? अपन देखेंगे थोड़ा सा, we can see some evidence. The main limitation of their work. So क्या लिखा हुआ है उसने? That is suggestively strong correlation and the author's hypothesis is fortified by other evidence. This may help them to stand out amid the foliage. ठीक है? Climatic foods and early botanical camouflage. The main limitation of their work is that they looked at fruits eaten by people. This has probably contaminated the sample for thousands of years selective breeding. The next step, therefore, should be क्या लिखा हुआ? Selective breeding for traits that human beings find appealing may have blurred any signal optimized by natural selection. The next step, therefore, should be the analysis of wild fruits. So the author definitely says that yes, there is some sort of good thing that has come out of the research, but what he wants further is that the origins of the distinguishing characteristics between the two types are dependent on researcher observation. So again, I don't like this wording, but trivial, it's very difficult, to pick. छोड़ो यार, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा. I don't know why, how to word it. The study has been based on, किस पे based हुआ है studies? Option A. Yes or no? Easy question है. Sir, we B होगा. The study has been based. Wild fruits अपन ने लिया ही नहीं ना. अपन ने human fruits को वो लिया हुआ है ना. हाँ तो तभी तो वो बोल रहा है ना कि wild fruits को भी include करें आप. हम्म, समझे कि नहीं? ये तो बड़ा easy question है. हाँ, Yes or no? yes. Everyone, don't you feel that this is a very, very simple question? Agreed, all of you? Can I say that this is the answer? Sorry, this is the answer. Yeah. The study has been based on fruits consumed by humans. That is the reason why the author says कि जो humans खाते हैं उसके लिए जो breeding नहीं होता है. What do humans do? They basically breed the fruits. Breed का मतलब क्या होता है कि भाई ठीक है वो लोग आम को अपने इसमें the fruits they will grow in their own environment and वो natural नहीं होता, फिर wild में नहीं होता. So the author says that until now the study has included fruits that are consumed by humans. Let's go and include even those fruits that are there in the wild. If you want evidence for that, this is there. Look at this. क्या लिखा हुआ है? The main limitation of their work is that they looked at fruits eaten by people. People मतलब क्या? Humans. This has contaminated the sample. The next step is should be the analysis of wild fruit. मतलब कि wild fruit नहीं लिया गया है analysis में. So if the question says that the study has been based on, it has been primarily based on fruits consumed by humans. है ना? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. अब आप बोलोगे सर fruit sourced by green grocers, not necessarily green grocers. कोई और भी तो दे सकता है ना? Fruits available at the university. So stupid option है. Yes or no? Very easy question. Everyone agrees with it? Yes, sir. तो मुझे बताओ कि इसमें कितने क्वेश्चन बनने लायक थे फटाफट. 6 में से कितने बनते? This could have been cracked in let's say 20 seconds. Agreed? 20 seconds में ये क्रैक हो जाता. देखो ये अगर आपको ये पढ़ने से नहीं मिलने वाला. We know that the author is definitely not very clear and nebulous भी नहीं है. It could be either dependent on research observation. Trivial हो सकता है कि भाई insignificant है. Why? Because हमने wild foods को लिया नहीं है. मुझे A और B में थोड़ा सा लग रहा है. I felt B is the answer. But again, you should not take much time to mark the answer. So this also can be finished very quickly. You may get it right, you may get it wrong. That's a different thing. Question number 4 should have been left. है ना? The main point the writer makes is of all kinds need to be studied, not just consumed by humans. Correct. This is the main point he's making. Second का थोड़ा सा वो था, but so can I say we could have managed 3 questions very quickly in this with great confidence. You might have tried your luck in 1 question and you could have left let's say 1 or 2 questions. तो पॉइंट ये आता है ना बैठ के कि ठीक है यार आपके 6 क्वेश्चन अगर आरसी के अंदर आते हैं
तो हो सकता है कि उसके अंदर मिक्स्ड ब्लेंड ऑफ क्वेश्चंस होगा. यू कैन ट्राई योर लक ऑलवेज कि भाई ठीक है, आपको लगता है कि आई हैव शॉर्टलिस्टेड 2 ऑप्शंस, आई कैन ट्राई माय लक इन, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़े से वो टेढ़े मेढ़े लग रहे हैं, बट ठीक है, दैट्स नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज दैट देयर आर इजी क्वेश्चंस एंड इन दिस नंबर 1 वाज वेरी इजी, number 3 was also quite manageable, number 6 was very easy, number 4 should have been left, number 5 was little contentious. Clear with these people? लेकिन ये है कि भी कोई भी क्वेश्चन बहुत आउटराइटली टफ नहीं है कि यार ऐसा है कि बनेगा ही नहीं, बहुत हैवी रीजनिंग इन्वॉल्व नहीं है. दैट मीन्स दैट आरसीज प्रेफरेबली आपको करना चाहिए rather than just going and attacking only the paradigms and all other kinds of question. You should take your attempt very high. You please understand this. Attempt high होगा तो कहीं लक होगा, कहीं लक नहीं होगा, और मोटा मोटी बैलेंस हो जाएगा. ठीक है? Can we take the next RC now, all of you? सर कितने टाइम में करना है आरसी? देखो मुझे लगता है कि आपके पास कितने क्वेश्चन है इसके अंदर, 6 क्वेश्चन है ना, तो आप इसमें 6 क्वेश्चन मतलब मोटा मोटी हाउ मच टाइम यू हैव पर क्वेश्चन? पर क्वेश्चन कितना टाइम आ रहा था? ऑलमोस्ट अ मिनट, राइट? हाउ मच टाइम वेर यू गेटिंग पर क्वेश्चन? एक मिनट. 45 question, 40 minutes. 45 question, 40 minutes, so less than 1 minute per question. There are lots of questions which can be finished. Roughly you should take less than 1 minute per question. तो अगर 6 मिनट है तो 6 क्वेश्चन 6 मिनट में खत्म कर दो, ऐसा कुछ होना चाहिए. हेलो, 45 है ना, 45 क्वेश्चंस है, 40 मिनट्स है, सो यू कैन टेक रफली लेस देन. देखो जो ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं, one of the statements below contains a word used incorrectly, all these questions can be cracked in less than 1 minute. This is where you will save time. बट जब हम यहाँ पे टाइम सेव करके आएंगे तो टाइम कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट भी करेंगे ना. जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ ये वाले क्वेश्चंस, थोड़े टफ थे फिल इन द ब्लैंक्स, बट अगर मैं आता हूँ इसके ऊपर ये वाले क्वेश्चंस 24th, 23rd, 22nd, 21st, 20th, ये सब पता है 15-15 सेकंड वाले क्वेश्चन है. तो ओवरऑल अगर आप एवरेजिंग करोगे तो हो सकता है कि आपके पास मोटा मोटी 1 मिनट पर क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी करोगे जो बहुत ईजी होंगे, जिसको मतलब या फिर आता है या फिर नहीं आता है, आपको टाइम देके क्वेश्चन आ नहीं जाएगा. पैराजम्बल्स और रीडिंग कॉम्पिटिशन क्या होता है, टाइम देके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, लेकिन वोकेबलरी, ईडियम्स, फ्रेजेस और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन जो छोटे छोटे होते हैं, उसमें टाइम देने से आपको आंसर नहीं आने वाला, बिकॉज या फिर आपको आता है या फिर नहीं आता है. तो जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको बहुत रैपिडली खत्म करना है अपने को. उसके बाद में जो टाइम बचता है उसको वहां इन्वेस्ट करें जहां पे आपको लगता है कि हायर प्रोबेबिलिटी है आंसर आने का. फॉर एग्जाम्पल, स्पेंड मोर टाइम on, let's say, parajumbles which are shorter and easier to do. Similarly, spend more time on the RC. तो आपने फटाफट रीड कर लिया. से आप मुझसे पूछोगे सर कि आरसी रीड करने में कितना टाइम जाना चाहिए, मेरा ये है कि व्हाट इज माय ओपिनियन दैट आरसी ऑफ दिस साइज कैन बी फिनिश्ड विद इन 2 मिनट्स रीडिंग करके. रीडिंग आपने 2 मिनट में खत्म कर लिया, उसके बाद में आप क्वेश्चंस को वन बाय वन मत लें, आप उन क्वेश्चंस को पहले अटैक करें जो आपको लग रहा है कि बड़े छोटे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले में आता हूं मैं, तो व्हेन आई रीड दिस आरसी फर्स्ट, आई नो दैट ओके इट टॉक्स अबाउट क्लाइमेट्रिक, नॉन क्लाइमेट्रिक एंड ऑल दोस थिंग्स. सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करूंगा, बिकॉज मुझे पता है ये प्योर वोकेबलरी क्वेश्चन है. उसके बाद में ये पूछा है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज द इंटरेस्ट इन द डिफरेंस बिटवीन. अब ये बहुत टाइम तो लगेगा नहीं, बट हो सकता है सही भी हो जाए, हो सकता है गलत भी हो जाए. अब मैं अगर लास्ट वाला देखूं तो लास्ट वाला फट से बन जाएगा, द स्टडी हैज बीन बेस्ड ऑन. सो 2 क्वेश्चन मेरे फटाफट बन गए. They did not take much time. I did not take much time to complete those 2 questions. But the other questions then I have to finish very quickly. हो सकता है कि कुछ मैं छोड़ दूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 आई वुड डेफिनेटली लीव. व्हाई? बिकॉज आई नो इट विल टेक टाइम. तो 2 मैंने फटाफट कर लिए, 1 को मैंने छोड़ दिया, बचे 3, 5th, 3rd एंड 2nd. सो इन दिस इफ यू लेट्स से टेक 50-50 भी होता है तो ठीक है, हो सकता है कि 2 बन जाए, 1 रॉन्ग हो जाए, या 1 बन जाए 2 रॉन्ग हो जाए, वो रिस्क आप ले सकते हो. बट मेरा कहना है कि इसको 4 मिनट में खत्म करके तमाशा पूरा बंद करो. समझ में आ रहा है कि नहीं? दैट्स व्हाई आरसी फटाफट रीड करो आप, ताकि आपके पास टाइम मिले जाकर के बाकी क्वेश्चन को करने का. सेम थिंग अपन यहाँ पे भी करते हैं. ठीक है, अभी ऑफ कोर्स आई विल हैव टू स्क्रॉल द शीट, बट ट्राई दिस आरसी एंड चेक विद इन हाउ मच टाइम यू कुड हैव फिनिश्ड रीडिंग द आरसी. रीडिंग द आरसी 2 मिनट्स एंड देन टेक द लुक एट द क्वेश्चंस एंड फ्रॉम द क्वेश्चंस यू गेस कि क्या ये जल्दी बनने वाला क्वेश्चन है या क्या ये टाइम लगने वाला क्वेश्चन है. ठीक है, चलो
Please take. I will. The moment you are done with it, please tell me. I will scroll the page. Down. Question number 7. 23 cases. क्या होगा आंसर? Let's look at it. (23 केसेस किस चीज को लेकर के हैं? To prove that cowpox is Protective quality. तो A. काउपॉक्स वैक्सीन, हाँ ए हो सकता है ना. अनदर मतलब ये अनदर जो है ये तो स्मॉल पॉक्स ही है ना. अब ऐसा नहीं उठा के लिख देगा आपको तो स्मॉल पॉक्स दिया ही नहीं तो कैसे मार्क करें. बट स्मॉल पॉक्स हो सकता है ना, बिकॉज स्मॉल पॉक्स इज अनदर डेडली डिसीज. So can I say if I look at option number A, this can be replaced with smallpox? Yes or no? It is beneficial to immunity if you work with cows and this is not what they are trying to say. अगर ऐसा है तो फिर वैक्सीन देने की जरूरत नहीं ना. गाय और घोड़ों के बीच में काम करो. Ready to go to any extent. 23 cases तो बच्चा नहीं है ना उसके अंदर. होगा भी तो क्या फर्क पड़ेगा. Can I say A is the answer? Everyone agrees? Yes, sir. कितना टाइम लगेगा इसको तोड़ने में? ये क्वेश्चन 2 मिनट आपने रीड किया. इस क्वेश्चन को टाइम कितना लगेगा? 30 सेकेंड्स. 30 सेकेंड्स में हो जाएगा ना. मुझे लगता है हो जाएगा 30 सेकेंड्स में. 23 Yes, केसेस में sir. जाके मार्क करना है. 30-40 सेकेंड्स मैक्स. 40 सेकेंड्स बहुत होता है यार. By calling the vaccine unjustifiable, डॉक्टर आई meant that vaccination. क्या
Dr. I was negative, right? Dr. I was negative against vaccination. So what is he trying to show? Huh? By calling the vaccination unstable, doctor meant that vaccination made people sick हो सकता है या फिर spread the disease to a larger population. No, वैक्सीन डिसीज नहीं फैला रहा था, वो कुछ और डिसीज कॉज कर रहा था, है ना? डॉक्टर आई ने क्या बोला? डॉक्टर आई ने क्या बोला? देखो यहाँ पर Dr. I became leader of strong faction of the medical profession who not only would have nothing to do with it, so it is dangerous communicate that disease several cases measles and communicated a disease in severe cases of measles. तो भाई वैक्सीनेशन तो काउपॉक्स का है ना, स्मॉल पॉक्स का है ना, लेकिन डिसीज कौन सा आ रहा है? मीजल्स आ रहा है एंड अदर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि वैक्सीनेशन जो दे रहे हो वही डिसीज नहीं स्प्रेड हो रहा है। The vaccination is not spreading the same disease. It is basically making people sick, and so made people sick how? By measles and other things, है ना? Can I say D is the answer? Everyone agrees? BOD तो पक्का, BOC तो पक्का नहीं है। अब A हो सकता है या B हो सकता है। Actually spread the disease, ये कौन सा disease है? When you have the article the, it refers to specific disease, right? Which disease? हाँ, ये कौन सा डिसीज हो सकता है? The disease means the disease you are trying to vaccinate people against. Are you getting my point? ये डिसीज होगा ना, और कौन सा होगा? तो आप चाहते हो स्मॉल पॉक्स ना हो किसी को, तो आपने वैक्सीनेट किया काउपॉक्स से, और काउपॉक्स से लगाने के बाद में स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है, but it says that it is spreading the disease to a larger population, made people sick and failed to provide general immunity. Yes or no? Everyone agrees? Yes, sir. और तो कुछ नहीं होगा, इजी है, बन जाएगा, इतना टाइम नहीं देना चाहिए। डॉक्टर आई खाली इधर ही आए हैं ना, डॉक्टर आई का आंसर इधर ही होगा, और ना आगे ना पीछे, इधर ही है डॉक्टर आई का आंसर। but proclaimed openly that it was a dangerous innovation, absolutely dangerous, and communicated a disease in severe cases of measles. हाँ, communicate which disease? Measles and measles related death. तो ये काउपॉक्स की जो बात हो रही है, स्मॉल पॉक्स की डिसीज कोई और स्प्रेड कर रहा है, it is spreading some other disease. It is not the disease. You cannot use the word the disease. You can spread people, it made people sick through measles and all. According to the author, the main idea of the passage is अर्बन सेंटर्स की तो बात नहीं हो रही है। क्या लग रहा है आपको बेस्ट कौन सा होगा? बताओ मुझे। व्हाट डज योर कॉमन सेंस से? यस पीपल, C. सी होगा सी ना, लग और रहा क्या सर। होगा? और होगा ही क्या? E. देखो भाई, पहली चीज आप देखो ये, ठीक है, एक एक ऑप्शन को समझो, एक एक वर्ड समझो उसका। क्या कहीं पे हेजिटेंसी हुई है? तो एक्सप्लोर द कॉजेस फॉर वैक्सीनेशन हेजिटेंसी। सो देखो, वैक्सीन हेजिटेंसी नहीं हुई है बेसिकली कि भाई, और अगर हुआ भी है तो इसका कॉजेस नहीं है। इनफैक्ट हेजिटेंसी वाज ओनली बाय डॉक्टर आई, बाकी तो लोग सपोर्ट किए ना जेनर को। ऐसा भी नहीं कि लोगों के अंदर कोई प्रोटेस्ट था कि पीपल डोंट वांट टू गेट वैक्सीनेटेड। Yes, Dr. I was there who was against it, but you will find that Mr. Jenner had the support of the scientific community. That's the reason why he became successful. So can I say that vaccination hesitancy है ही नहीं है, और अगर है भी तो उसका causes को लेके बात नहीं हुआ है? Can I say B goes out? Everyone agrees? एक भी cause आया ही नहीं है कि लोग hesitation क्यों होता है वैक्सीनेशन को लेकर के।
चांसेस साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज और मेरे को लगता है ये जो है ना, ये अर्बन सेंटर जरूरी थोड़ी ना यार कि अर्बन सेंटर पे तो फोकस ही नहीं है कि अर्बन सेंटर में होता है बाकी जगह नहीं हो सकता, तो ये भी थोड़ा सा गड़बड़ है। अब आप देखोगे तो ए बोलता है डॉक्यूमेंटेशन इज द की फॉर डिसेमिनेटिंग साइंस। ये आपको साइंस क्यों इतना प्यारा लग रहा है जब पूरे पैसेज के अंदर जो मेन आइडिया वो है वैक्सीन को लेकर के, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को लेकर के मेन वो हो रहा है। एंड व्हाट इज द स्टोरी इज बेसिकली व्हाट अ रिस्क इज डेफिनेटली देयर। अपने बच्चे को लगा दिया उसने, मालूम है क्या? और चांस क्यों? क्योंकि प्योर प्योर लक था ना ये तो। इफ यू लुक एट द फर्स्ट पैराग्राफ, इट इज प्योर लक दैट हैज प्लेड इट्स पार्ट। इफ आई गो अप हियर, what do you see in the first paragraph? On May 14th, vaccine matter was taken from the hand of a dairy maid and inserted by two superficial incisions in the arms of James Phillip. The boy went through the attack of hoppers. He was delighted to know that the boy was not affected. So can I say this is some sort of chance and risk taken? So basically, अगर आप ये बोलते हो कि सर डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है? टेकिंग रिकॉर्ड ऑफ समथिंग. And secondly, you also make a mistake further by saying that disseminating science. How come science has become the main idea of the passage, whereas the main idea is the word vaccine? Scientific experiment यहाँ पे क्या है? Vaccination है. Scientific breakthroughs are more likely. ठीक है, scientific breakthrough, scientific experiment, disseminate. Documentation यहाँ पे documentation. What is the meaning of documentation? Can anyone tell me the meaning of the word documentation? इसका मतलब क्या होता है? क्या मतलब है डॉक्यूमेंटेशन का? कोई बताएगा मुझे? So to record something. To record something word by word, bit by bit. Experiments. हाँ हाँ, डॉक्यूमेंटेशन मतलब होता है कि टू टेक नोट्स ऑफ समथिंग, रिटन नोट. डॉक्यूमेंटेशन इज ऑलवेज अ रिटन नोट ऑफ समथिंग. तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन कहीं पर हुआ है पूरे पैसेज के अंदर? भाई वैक्सीन बच्चे को लगाया, 2 दिन में ठीक हो गया, 23 लोगों पे लगाया, अपने बच्चे को भी लगाया उसने, फिर वो. सो इफ यू लुक in the entire passage, documentation has not even come in the passage. Forget about it being a dominating theme. The first paragraph, no documentation. Second paragraph, no documentation. Dr. Jenner had made his tests. He prepared pamphlet for publication. He also went to London. है ना? He remained in London for nearly 3 months, but कोई taker नहीं था. And then again, Mr. Klein became the advocate of something. So there is no documentation as such. In fact, it is inappropriate to use the word documentation is the key for disseminating science. Chance and risk play a part in successful scientific. Why it is a scientific experiment? I like the word scientific experiment because vaccination पहले नहीं था. ये तो बेसिकली ऐसा था कि भाई ट्राई मारा गया, हो गया, और फिर वो 23 लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया गया, 23 लोगों में उसका बच्चा भी था. तो इट इज मोर ऑफ अ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट रादर देन डिसेमिनेटिंग साइंस. एंड इज मोर चांस एंड रिस्क. वाई? चांस का मतलब होता है ठीक है कहीं ना कहीं रियलाइज कोई किया होगा, और रिस्क क्यों है? बिकॉज पीपल वर विलिंग टू टेक द रिस्क ऑफ गेटिंग इंसर्टेड बाय स्मॉल पॉक्स. अरे मर गए होते यार. तो कैन आई से सी इज द बेटर चॉइस ऑफ ऑल? ये बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए यार, ये इजी क्वेश्चन है, इसको इतना डिस्कशन नहीं बनता इसका. यस और नो? एवरीवन एग्रीज विद इट? Yes, sir. Yes. On returning from London, Dr. Jenner was disappointed. Why? Why was he disappointed? I think he was disappointed because of something. यहाँ पे दिया हुआ है. Sir, he remained in London for nearly 3 months Without find anyone who submit to vaccination. कोई ट्रायल लेने को तैयार नहीं था. है ना? तभी तो रिस्क वाला, ये जो रिस्क वाला वर्ड है ना, सही था. चांस एंड रिस्क प्ले पार्ट. कोई ट्रायल लेने को तैयार नहीं था, तो यहाँ पर क्या होगा? हाँ, लैक ऑफ वॉलंटियर्स, यही होगा ना? यस और नो? Yes, sir. इजी है ना भाई, इसको क्या डिस्कस करना है इतना? लोकल रिएक्शन रिफर्स टू व्हाट इज लोकल रिएक्शन? और जो पास वाले लोग हैं उनका रिएक्शन क्या था? तो किसको? एडवर्स रिएक्शन कॉज बाय इंजेक्शन नहीं. एनकरेजिंग रिएक्शन फ्रॉम पीपल ऑफ द लोकेलिटी, एनकरेजिंग रिएक्शन फ्रॉम लोकल डॉक्टर्स, adverse comments and protests by people from that location. तो कहाँ है local reaction? Just go and check.
Where is local reaction given? ढूंढना पड़ेगा. This can be a time consuming thing, but you can just scan and say where is local reaction. This case was attracted conversion. The child was under condition and the vaccine material might very well have provoked a rather serious local reaction. Local reaction का मतलब क्या होगा? नेगेटिव होगा ना ये. The vaccine material might well have provoked a rather serious local reaction. That means the people in that local region, है ना, adverse comment and protest हो Adverse सकता है. reaction caused by Adverse ही होगा ना, injection. because वो local reaction negative form में use हुआ है ना. तो encouraging तो कहीं किसी एंगल से नहीं होगा. Yes sir, D होना चाहिए क्योंकि A is more मतलब कि Adverse protest. reaction caused by injections. नहीं, adverse reaction caused by injections होगा, but मेरे को ये देखना है कि ये local reaction किसके लिए use हुआ है ना. अच्छा, वो लोकल रिएक्शन मतलब लोकल लोगों का है या वो है कि नहीं? This case attracted considerable attention, है ना? So इसका मतलब there was some sort of popularity about this case. The child was in rundown condition and the vaccine material might very well have provoked a rather serious. देखो ये provoke जो होता है ना, ये opinion को लेके होता है हमेशा. अगर ये लोकल रिएक्शन होता मतलब बॉडी के अंदर तो वो कॉज्ड होता rather than provoked. समझ में आया कि नहीं? Yes sir. प्रोवोक्ड होता है हमेशा इन टर्म्स ऑफ किसी को उकसाना. तो ये प्रोवोक्ड वर्ड प्लस ये सीरियस लोकल रिएक्शन प्लस ये अट्रैक्टेड अटेंशन, ये तीनों चीज होती. द केस अट्रैक्ट पॉपुलैरिटी. had it not gone the right way it would have provoked people's adverse comment and all. तो यहाँ पे इसीलिए यूज किया गया है that adverse comments and protest by people from that location. Of course local है भाई, जो दूर है उनको क्या ही मतलब होगा. So adverse reaction caused by injection नहीं होगा, not by the injection. उसके लिए हम provoke word use नहीं करेंगे. ठीक है, clear to all of you सर why पर the word provoke? प्रोटेस्ट बाय पीपल वगैरह थोड़ी ना लिखा है तो मतलब वी का मतलब प्रोटेस्ट बाय पीपल तो बहुत वैसा हो गया, एक्सट्रीम केस हो गया. नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, देखो एक तो होता है प्रोवोकेशन. व्हाट इज प्रोवोक? व्हेन यू यूज द वर्ड प्रोवोक आप किस सेंस में यूज करते हो? उकसाना. उकसाना होता है, तो उसका मतलब उकसाना गलत चीज के लिए होता है. यू डोंट प्रोवोक पीपल फॉर अ गुड थिंग. यू अंडरस्टैंड दिस? और उकसाना होता है प्राइमरीली वायलेंस या अब्यूजेस या फाइट या हंगामा शोरगुल, उस तरह से होता है. सो अगर वो लोकल रिएक्शन होता और प्रोवोक होता तो यही सब होता. इंजेक्शन के लिए हम लोकल रिएक्शन यूज नहीं करेंगे और प्रोवोक वर्ड यूज नहीं करेंगे. बीओसी तो एंकरेजिंग से बाहर है, तो आपको यही मार्क करना है क्योंकि आपके पास दूसरा ऑप्शन बचता है डी. बट मेरा ये कहना है कि अगर एडवर्स रिएक्शन कॉज बाय इंजेक्शन होता तो क्या उसके लिए आप प्रोवोक यूज करोगे, प्रोवोकिंग लोकल रिएक्शन या कॉजिंग लोक? मेरे को वो प्रोवोकिंग भी सही नहीं लग रहा है. लोकल रिएक्शन मैं किसी भी मतलब एंगल से है ना उसके लिए यूज नहीं करूंगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर. Jenner received a lot of recognition from medical bodies because fortunately only few colleagues were illogical enough to reject him. दो ही हो सकता है ना, या फिर ये हो सकता है या फिर बी हो सकता है. What do you think is the answer? Most of his colleagues. Let's go and check if most of his colleagues realize the effectiveness of the work. सर बी. ए या बी दोनों में से हो सकता है. He got recognition
बिकॉज ये नहीं रीजन होगा, तो ए और बी हो सकता है ना। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज मोर अप्रोप्रिएट? अब ये भी यहाँ आके होता नहीं, दो ऑप्शन ऐसा है कि इफ ए देन बी इज ट्रू, इफ बी देन ए इज ऑल्सो ट्रू। ए लग रहा है सर। यार यही सब होता है ना, ये ऑप्शन ऐसा वर्ड करते हैं ना, आई मीन इट्स जस्ट लाइक दे आर द फ्लिप साइड ऑफ ईच अदर। Fortunately, only few colleagues were so illogical, and an excellent idea of how much resource issued by his companies may be obtained from the number of honors. So people did appreciate his, देखो, an excellent idea of how much generous discovery was appreciated by his contemporaries. तो जो इनको ऑनर और डिप्लोमा वगैरह मिला है ना, ये किस चीज से मालूम पड़ता है अपने को? that how much his work was appreciated by his contemporaries. यहां से लेके यहां पे आंसर छुपा हुआ है, yes or no? Yes, everyone agrees that this is the secret to the answer. He obtained honors, diplomas, etc. And that signified what? That how much his discovery was appreciated. है ना? मैं तो ए मार्क करूंगा, because most of his colleagues realize the effectiveness. You are getting recognition because your work is effective, not because Sir, few had rejected you. है ना? यस सर। yes, मतलब देखो, आपको ऑनर क्यों मिलता है? ऑनर इसलिए मिलता है कि भाई ठीक है, आपने कुछ अच्छा करके दिखाया है। हो सकता है कि नॉट मेनी वुड रिजेक्ट यू, बट दैट डजंट मीन यू हैव बीन सक्सेसफुल। है ना? Many people did not reject. Why? Because his work might have had the possibility of being correct. So rejection implies that there is a possibility, but it doesn't suggest that it is a success. Did you understand? Rejection implies that कि भाई ठीक है, चलो, मतलब it is definitely wrong. But in medical science and all, there is also the possibility of something being considered rather than successful. एक होता है कि चीज सक्सेसफुल हो जाती है, एक होता है कि चीज कंसिडर कर सकते हैं, एक होता है कि चीज रिजेक्ट हो जाती है। सो रिजेक्ट हो गई तो फिर ठीक है यार, मतलब क्या ही मिलेगा। एंड बिकॉज वेरी फ्यू रिजेक्टेड डज नॉट मीन दैट यू हैव बीन वेरी इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल. So you have got recognition and honor because people did realize the effectiveness of his work. That's the reason why he has got honors, not because few colleagues were illogical enough to reject him. इसके वजह से आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ये कोई रीजन नहीं है। ठीक है, ए इज द आंसर, आई वुड मार्क ए, नो डाउट। मतलब ए इज द पॉजिटिव रीजन व्हाई। कैन आई से दिस वाज इजी पैसेज इन कंपैरिजन टू द अर्लियर वन? ठीक है यार, एक दो रॉन्ग हो जाते हैं, बट कैन आई से फटाफट कंप्लीट हो जाता है ये। Yes, sir. तो मेरा कहना ये है कि अगर मैं टाइमलाइन डिवाइड करूं आपके लिए, तो 6 मिनट पहले वाले में, 6 मिनट दूसरे वाले में, 12 मिनट का अगर मैं करता हूं, तो 12 मिनट के अंदर कैन आई से आई कुड हैव गॉट अराउंड लेट्स से 8 क्वेश्चंस करेक्ट रफली, और 7-8 क्वेश्चंस करेक्ट। पॉसिबल था ना? देखो, आंसर अगर गलत हुए हैं तो ये इसलिए गलत हुए हैं क्योंकि ऑप्शन थोड़े से टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, ठीक से वर्डेड नहीं थे। बट कोई बहुत रीजनिंग हैवी नहीं था कोई भी क्वेश्चन, यस और नो? Don't you feel that none of the questions were reasoning heavy? Yes, they could have taken time because you had to go to a certain part of the passage and find the answer. But for that, you need to be very sharp and agile. जैसे पहला वाला 7th क्वेश्चन बड़ा आसान लगा मुझे, है ना? एंड 8th क्वेश्चन में दो ऑप्शन थे जहाँ थोड़े से आपको थोड़ा टाइम लगता, अदरवाइज यू कुड हैव मैनेज्ड। 9th क्वेश्चन वाज इजी, दो वी टुक टाइम, बट 9th क्वेश्चन वाज वेरी इजी। इवन 10th वाज वेरी इजी। लोकल रिएक्शन में भी ठीक है यार, मतलब ऑप्शन को थोड़ा सा है ना, अगर आप खंगालोगे तो आंसर फटाफट बन जाएगा, बहुत रीजनिंग की जरूरत नहीं है। So my suggestion is that don't leave the RCs. I would say that all of you attempt all the RCs.
which are doable and not complicated. Attempt all the questions which are from this kind of 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. देखो ना कैसे हैं 20, 21, 22, 23 एक साथ करीबन 10, 12, 15 ऐसे क्वेश्चन हैं जो फटाफट हो जाते हैं. इवन 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 से सॉरी 29 से चालू हो जाता है लंबा वाला क्वेश्चन. दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी. दिस वुड टेक टाइम. बट अगर आपने एक भी ब्लैंक फिल कर ले तो आपका आंसर बन जाएगा. So don't try to fill everything. Just look for the blank which is the easiest to fill. So try to look at the options and keep on trying. But ये time consuming है 29, 30, 31. These can be time consuming. If they are easy, you can get through. If they are not, you will take time. उसके बाद में इनकरेक्ट वर्ड यूसेज ये फटाफट बनेगा 35, 36, 37 ये जल्दी 38 भी जल्दी बनेगा 39 भी जल्दी बनेगा. तो जो भी क्वेश्चन वोकैबुलरी से आ रहे हैं ना वो पूरे जल्दी जल्दी बन जाएंगे. टाइम कंज्यूमिंग कौन सा है? पैराजम्बल्स है जो लास्ट में आया हुआ है. और मेरा सजेशन ये है कि जो लास्ट के पैराजम्बल्स है अगर उसमें 4 सेंटेंस होते हैं तो प्लीज ट्राई करें. अदरवाइज दिस शुड बी योर लास्ट प्रेफरेंस. आपको पैराजम्बल्स एकदम एंड में करना है. इनफैक्ट पैराजम्बल्स के पहले आप प्लीज आरसीज करें. तो ये जो 5 पैराजम्बल्स है लास्ट में, सॉरी हाँ 5 ये ना 41, 42, 43, 41, 45 ये 5 आप एकदम लास्ट के लिए रखिए. इसके पहले आप क्या करें कि जितना भी वोकैबुलरी क्वेश्चन है इंक्लूडिंग फिल इन द ब्लैंक्स विद वोकैबुलरी ये वाले इनको पहले सॉल्व कर लें. तो मुझे लगता है कि आपको लगता भले है कि हाँ मतलब पेपर बहुत लेंदी है एंड टाइम कम है. बट देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यू कैन फिनिश विद इन 1 मिनट 3 to 4 क्वेश्चंस फटाफट. सो अटैक ऑल द वोकैबुलरी क्वेश्चंस वेरी क्विकली. फिनिश द आरसीज ऑल ऑफ देम. The fill in the blanks that have vocabulary in them and the parajumbles. Try to do only those which you feel कि हाँ जल्दी जल्दी बन जाएगा. तो अगर छोड़ना है तो आप पैराजम्बल्स को छोड़ें. मतलब not all the questions but some of them. So ideally you can attempt around 37, 30, at least 40 questions. तब जाकर के कुछ ना कुछ possibility होगी. Clear to all of you? कल मैं क्या कराऊंगा मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए है ना मैं कल अरे यार कहाँ गया ये है ना 2022 मैंने करा दिया ना पूरा. पुराने वाले थोड़े इजी हैं. मैं ये भी देख लेता हूँ रोहतक वाला भी. ठीक है ये ग्रामर स्टार्ट करवा दो. हाँ सर ग्रामर स्टार्ट करवा दो. हाँ तो ग्रामर कल कराता हूँ. ठीक है ठीक ग्रामर सर वो कराता जो हूँ. बुकलेट्स है उसमें से कराओगे? देखो मैंने है ना ग्रामर ऑलरेडी बना के रखा हुआ है. एक मिनट हाँ. एक मिनट अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे जाएं. ठीक है अगर आप देखेंगे तो मैंने ग्रामर बहुत बढ़िया कराया हुआ है. बट यहाँ पे देखो ये जो फोल्डर दिख रहा है ना ये वाला ये दिख रहा है स्ट्रक्चरल ग्रामर. मेरा सजेशन पता है क्या है? देखो ये मैं करा सकता हूँ कॉन्सेप्चुअली पूरा. बट आप फिर भी थोड़ा पढ़ के आए ताकि मैं जल्दी जल्दी खत्म कराऊं. समझ में आ रहा है? थोड़ा पढ़ के आओ ओके सर. मजा आएगा. क्योंकि मैं ग्रामर इतना बढ़िया करा दूंगा ना कि आपको बहुत सारे ग्रामर के क्वेश्चन. देखो ग्रामर की कोई गारंटी नहीं होती बट फिर मुझे लगता है कि यू विल हैव बेटर कमांड ऑन लॉट्स ऑफ थिंग्स. ठीक है सर गारंटी नहीं होती मतलब? हाँ क्या था? आई नॉट गेट इट. प्लीज रिपीट. सर आपने कहा गारंटी नहीं होती मतलब? गारंटी पता है क्यों नहीं होती? क्योंकि वो इतना सटल हो सकता है ना कभी कभार कि नोटिस नहीं होता. बट आईपीमैट इंदौर में नोटिस हो जाएगा. आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि आपको ऑप्शन दिए होते हैं. ऑप्शन कंपेयर करके आप आंसर मार्क कर सकते हो. बहुत सारे एग्जाम में पता है क्या होता है? सेंटेंस दिया हुआ है ABCD. थोड़ा सा घुमा देंगे कहीं पे समझेगा ही नहीं अनलेस यू आर वेरी शार्प और अनलेस योर क्या बोलते हैं इसको अनलेस द ग्रामर एरर इज वेरी फंडामेंटल. समझ में आ रहा है? जी सर. लेकिन मैं आपको एक फ्लोचार्ट बताऊंगा कि एरर होते कहाँ पर है.
उससे आपका अंदाजा लगेगा कि हाँ कहाँ पे मेरे को अटैक करनी है। ठीक है, यस सर। एवरीवन शुड वॉच दीज सेशंस। आप इसको देख के आए ताकि हम लोग है ना मेन कोर चीजों में फोकस करेंगे। क्लियर एवरीवन? कल मिलते हैं शाम को। हाँ, सर कल है ना कि नहीं है? हाँ सर है कल है ना, कल 14 है, परसों नहीं है, संडे को है फिर। जी। अगर आरसी आप चाहते हो तो आप और करो, बट मुझे लगता है आरसी है ना, मतलब दिस इज द वे वी कैन सॉल्व इट। जो कोर्स के अंदर के आरसीज है ना, आप खाली प्रैक्टिस के लिए करें। जैसे कि आप देखेंगे तो इसके अंदर मैंने बहुत सारे आरसी डाले हुए हैं, बट इसको एकदम दिल पे लेके मत करो कि यार ऐसा ना हो मेरे से रॉन्ग हो जाए, क्या होगा। आप खाली इसको प्रैक्टिस के पर्पस से सॉल्व करें ताकि आपकी स्पीड बनी रहे। एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो आ ही जाएगी, रीजनिंग बढ़िया हो जाएगा। सो ऑल्दो the RCs in your exams are easier than this, at least watching these will give you some idea कि भाई अटैक कैसे करते हैं ऑप्शंस को। आरसी छोड़ना नहीं बिल्कुल, पैराजम्बल्स लंबी हो जाएंगे, पैराजम्बल्स में आपको टाइम लगेगा, उसको सेक्रीफाइस कर दो, 2-3 क्वेश्चन नहीं करना है, आरसीज पूरा करो। ठीक है, ओके सर। कल मिले शाम को। यस सर। यस सर। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छे से सॉल्व Okay. करना है, कीप इन माइंड द पैटर्न, उससे स्कोरिंग आएगी। चलो बाय, सी यू टुमारो। सर। हाँ बोलो ना। सर मुझे कुछ बात करनी है आपसे, तो मैं कॉल कर लूँ या अभी आप रिकॉर्डिंग बंद करके अभी कर हाँ लो? कॉल करना, कॉल में अराउंड 7:30 मैं वॉक करता रहूंगा तो बात भी कर लूंगा। सर। ठीक है, ओके सर। सर हाँ सर वो जो बुकलेट्स है वो ग्रामर वाले वो यूज करें? हाँ, वही यूज करता हूँ मैं, उसी को मैं रेफर करने बोलता हूँ हमेशा। ओके सर। सर क्या? अरे वो बुकलेट नहीं, ग्रामर की दी है मैंने, ग्रुप पे दे दूंगा। यस सर, वापस भेज दीजिए। ठीक ठीक ठीक।